Hello students, welcome to the next lecture of breathing and exchange of gases. In our previous lecture we had discussed about the gaseous exchange, how the exchange of gases takes place in our body from the higher partial pressure to the lower partial pressure of the gases. Now in this section we will discuss about the transport of gases. So here is transport of gases. There are two gases which have to be transported, that is oxygen and carbon dioxide gas. These two gases have to be transported in our body. Firstly, we have to discuss about transport of oxygen. How the transport of oxygen is going to take place. So we have to discuss about the transport of oxygen. This oxygen can be transported in two forms. The first form as dissolved oxygen in the plasma of blood. First form in which the oxygen has to be transported is in the form of dissolved oxygen in plasma of blood, and this type of transport is only about 1 to 3%. Out of 100, only about 1 to 3% of oxygen is transported in the dissolved form in the plasma of blood. The second one is in the form of oxyhemoglobin. In the form of oxyhemoglobin, and about 98% oxygen is transported in this form. क्लियर? 100% ऑक्सीजन में से 1 to 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और अबाउट 97-98% और 99% में भी 97 to 99%, 98 is the average, is transported in the form of oxyhemoglobin. Here the hemoglobin, which is a respiratory pigment, plays a very important role. So here is hemoglobin. This hemoglobin is having two parts. First part is the proteinaceous part, and the protein is globin protein. So the first part is globin protein, and the second part is iron containing part. Second one is iron containing part, and this iron containing part has porphyrin ring. It has porphyrin ring. In this porphyrin ring, the iron 4 pyrrole rings are attached at the 4 corners. So here, suppose this is the proteinaceous part, and here the 4 pyrrole rings are attached. Clear? These pyrrole rings are made up of iron, and this iron is in the form of ferrous state. So this is the iron. 4 pyrrole rings through which the iron is going to attach. This iron is in the form of ferrous iron. So here 4 pyrrole rings of ferrous iron. Clear? Now each iron is going to bind one molecule of oxygen with itself. Clear? So each iron molecule is capable in binding
one molecule of oxygen with it. Clear? So this is the structure of oxyhemoglobin. The proteinaceous part, which is made up of globin protein. 4 pyrrole rings are present in which the ferrous ion of iron is present, and each ferrous ion is going to bind a single molecule of oxygen with it. It means each hemoglobin molecule is binding 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विद इट. एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड हो सकते हैं. यदि इसे हम ग्राम्स में कैलकुलेट करें, सो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हियर आई एम राइटिंग 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन binds about 1.3 milliliters of oxygen. This is the important part. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करता है यदि हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बात करें, और यदि हम इसको ग्राम्स के फॉर्म में बात करेंगे, सो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बाइंड approximately 1.34 ml of oxygen with it. Clear? एक मॉलिक्यूल इतनी ऑक्सीजन को बाइंड करता है. हमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट पता है. 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है. मेल्स एंड फीमेल्स में हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है. इन मेल्स approximately 14 to 16 grams of hemoglobin is there, and in case of females 12 to 14 grams of hemoglobin is there in the 100 ml of blood. Now what is the amount of oxygen? 100 ml blood के अंदर हमारे पास सपोज 100 ml of blood की यदि हम बात कर रहे हैं, 100 ml of blood में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है? Approximately 15 grams. Clear? We are talking about the approx situation or the average situation. In 100 ml of blood, 15 grams of hemoglobin is present. Then how many molecules of oxygen can bind with this 15 grams of hemoglobin? 15 into 1.34. क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इतना ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, तो 15 ग्राम कितना बाइंड करेगा? 15 इंटू 1.34. ठीक है. इस टाइप का क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है. यदि यहाँ पे हमें 13 ग्राम्स दे दिया जाए, आपको दे दिया 13 grams of hemoglobin is present in the 100 ml of blood, then how many molecules of oxygen are going to be bind with this hemoglobin? So what is the value? It may be 13.14. If here 11 grams is there, then the value is 11 into 1.34. क्लियर. 1 ग्राम के लिए वैल्यू हमें पता है, तो हम कितने भी ग्राम्स है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू निकल जाएगी. नेक्स्ट, द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जो कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन. इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्लियर. So it forms oxyhemoglobin. It is a temporary compound. The oxyhemoglobin which is going to bind, which is going to form, it is a temporary compound or the temporary complex. In our cells, it again dissociate into oxygen and hemoglobin. Oxygen is used by the cells or tissues and hemoglobin is getting freed to bind the next oxygen molecules. Clear? Because this is a temporary complex. The oxygen is transported in the body from alveoli. ना पिछले लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात किया था. वहां पे हमने देखा था एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर. That's why the oxygen diffuses from its
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा एंड दिस विल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, सो दैट विल प्रमोट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि ऐसा कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, वहां पे कम है, ठीक है, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। सो इन हायर एनिमल्स और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द 97 to 99% of oxygen is going to transported in the form of oxyhemoglobin, and in lower animals the oxygen is going to transported in the form of dissolved oxygen in the plasma of blood. Clear? So this is about the transport of oxygen. In our next lecture we will discuss about the transport of carbon dioxide gas. Thank you very much.